alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Alhamdulillah, I am fine. How about you? Alhamdulillah, I am also fine. Start our talking session with the Dudu Sharif. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. So आज कुरान पढ़ा था आज कुरान? Yes. अच्छा माशाल्लाह. अच्छा कौन सा जुज पढ़ा था? Fifth para पढ़ा था. What is the name of fifth para? والمحصنات. वलमुहसनात पढ़ा था. Okay. fifth पारे में कौन सी सूरह है? सूरह अन-निसा. सूरह निसा है. सूरह निसा फिफ्थ पारे में शुरू हुई है कि इसके पहले शुरू हुई थी? उसकी पहले शुरू हुई थी 4 जूस पर. 4 जुज पे. व्हाट इज द नेम ऑफ 4 जुज? लन तनालू. लन तनालू. और सूरह निसा फिर कौन से जुज में कंप्लीट हुई है, एंड हुई है? द 6th जूस. 6 जुज में एंड हुई है. ओके 4 जुज में शुरू हुई है और 6 जुज में एंड ला हुई है. युहिब्बुल्लाह. ला युहिब्बुल्लाह इज द जुज नंबर 6. ओके. So what is the meaning of Nisa? The woman. So what Allah has mentioned in Surah Nisa? Allah subhanahu wa ta'ala mentions in this surah the woman's rights in the society and role of the woman. And other matter Allah has mentioned in this surah. Okay. And this surah was revealed in where? Medina. Medina. Okay. But what is the longest surah of the Quran? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Okay. So how many ayat in the Surah Al-Baqarah? 286. 286 ayat है Surah Baqarah में? Yes. Okay, fine. Okay. और Surah Baqarah, what is the meaning of Baqarah? The cow. Cow. And what is the powerful ayat of Surah Al-Baqarah? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. And which ayat number is this? 255. 255. आयतल कुर्सी. कुर्सी मतलब क्या मतलब होता है कुर्सी का? Chair of Allah. Chair of Allah. Allah's throne. Allah's throne which extends over the heavens and earth. And we should read the Ayatul Kursi Before going outside somewhere. outside. When we go outside. When we go outside somewhere and after namaz, after every first namaz. Okay. And in the? And we read in the night time before going to sleep. Okay. And what else you read? I read Surah Al-Fatiha, Surah Al-Ikhlas, Surah Falaq, and Surah An-Nas, and Surah Kafirun. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi and I also read Tasbih Fatima. what is the Tasbih Fatima? Tasbih Fatima. Subhanallah 33 times. Alhamdulillah 33 times. Allahu Akbar 34 times. And La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And when I read all these du'as, Allah sends one angel to make a big circle around me. An invisible circle. Invisible circle. Okay. That protect us from shaitan and evil until morning. I can sleep beautifully and the beautiful dreams come. Okay, good, mashallah. One time you say Ayatul Kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.